go like कर देवी सर हाँ जाइए तो हाँ गुड इवनिंग श्रद्धा गुड इवनिंग पवित्रा okay we'll start first question is which state's chief minister has launched vehicle movement tracking system VMTS vehicle movement tracking system VMTS mobile app to track the vehicles carrying sand and other mining material. Option A is Maharashtra, B West Bengal, C Gujarat, D Madhya Pradesh, E Haryana. Good evening, Amit. Yes, Rohan, good evening. Please proceed. Shraddha first answers. It's Haryana. Yes, it's Haryana. So, your question number. Yes, Shraddha, it's Haryana. Yes, E is the answer. Right. Option E. Pavitra, it's right. Rohan, right. Amit, right. Okay. Especially why this tracking system is essential because there is huge um, allegations of corruption and corruption especially in mining, right? In case of mining there is huge allegations of corruption and to bring transparency they have launched vehicle movement tracking system. Okay, next. So tell me what is the capital of Harshavardhan? What is the capital of Harshavardhan? Where is the capital of Harshavardhan? Capital of Harshavardhan. Is there anybody who can tell? It's Thaneswar. Capital is Harshavardhan. Now it's Thaneswar. That is in Haryana, right? That is in Haryana. Okay. Next question. Who is the head of the high level committee found by Supreme Court for recovery of money from defaulters against whom National Spot Exchange has secured money decrees? What do you mean by decree? Decree means order, right? So, who was the head of the high level committee for this found by Supreme Court recovery of money from the defaulters against whom National Spot Exchange has secured money decrees? A. Pradeep Nandrajog, Apoorva Chandra, D. Murugesan, Ashwini Vaishnaw, Sunil Bajpai.
Is there anybody? Sorry. Why nobody is answering? Okay, it's Pradeep Nandrajog, right? Pradeep Nandrajog. He is heading the high level committee formed by Supreme Court against those who have defaulted the payments, right? We have another, yes, option A, Sadha, yes, option A is right. We have another insolvency and bankruptcy code. Remember, insolvency and bankruptcy code. Bankruptcy code. What is this insolvency and bankruptcy code? Yes, Pradeep. Pronounce right. What is this insolvency and bankruptcy code? If a particular, no, option is not right. Pradeep Nandraju. Insolvency and bankruptcy code. This is a new act under it came in 2017 that ensure that if a particular person is taking loan from bank and establishing an industry, then he is unable to pay the returns. Then what will happen? Bank will seize that bank will declare that industry as insolvent, right? Insolvent. So what will happen? And that limit is within 80 days. Within 180 days, a particular industry will be declared insolvent, not more than that, and that money will be recovered. Remember this insolvency and bankruptcy code, right? If somebody is not paying money, then they can also be in this way that can be taken insolvent. Nilam ହେଇଯିବ ସେ ସବୁ. Okay, Supreme Court regarding ଟିକେ details କହିଦେବି ଆଜି. ଏଟା ଆସିଛି ଆଜି ବେଶୀ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ବେସିକ୍ ଜିଏସ୍ର ଟିକେ କହିଦେଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍. ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା? ଇଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ କାଲକାତା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 Supreme Court of Calcutta established, right? At that time, right? Then Supreme Court of your Madras and Supreme Court of Bombay established in Madras Supreme Court established in your 1880 and Bombay Supreme Court established in 1823, right? Okay. After that, Government of India, there is a Federal Court of India established under Government of India 1935, right? Federal Court of India, Federal Court, yes, that's established in Act is regulating act under regulating act 1773 that established. So that is established in 1774, but the underlying act is 1773. Federal Court of India. Federal Court of India, it established. Voice is low. No, I am just near the system that it's impossible. If any other student is feeling so, please write in the comment section that voice is low. See, Federal Court of India, it established in 1935 Government India Act. Federal Court of India, right? That established in 1935 Government of India Act. Good evening, Singham. Okay. Next is what is the article of Constitution? Now Article 124 to 147 Part V. This is related to your judiciary, right? Our state has 3 branches. One is your executive, second is your legislature, third is your judiciary, right? The work of, okay, let me inform it.
Just let me inform it. हेलो वॉइस कम कन्फ्यूज पिला कहउछंती हां सेति सुबह अच्छा 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 ओके आ तो बेसी हे परिबनी there is some technical problem. Okay, part B is your judiciary, right? See, there are three branches of government state. One is your judiciary. What is the judiciary work of judiciary is law adjudication. Remember, law adjudication is under judiciary. What will do your parliament? Parliament, it will create law, right? It will create law. What is the job of executive? Executive is this will it will execute law, right? And among judiciary, okay, and among judiciary, Supreme Court is the apex court. Remember, among judiciary, Supreme Court is the apex court. That means the topmost court is Supreme Court, right? Under article, okay, topmost court is Supreme Court. Remember, that means it has various power. For example, I will tell you one by one what are the various power of Supreme Court. Important powers. For example, there is something called as Article 32. Article 32, under Article 32, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Remedies means, right, this is also called as writ jurisdiction of Supreme Court. Writ jurisdiction of Supreme Court, right? Of Supreme Court. That means जदि कार फंडामेंटल राइट भायोलेट हैला तो से सुप्रीम कोर्ट जी अंडर आर्टिकल 32 कहार भी फंडामेंटल राइट भायोलेट है सपोज के जने कहा को मर्डर कर देला से तुम सुप्रीम कोर्ट जाई परिबनी यू विल गो टू ए लोअर कोर्ट मर्डर केस रे बट जदि गवर्नमेंट तुमको अरेस्ट करके नहीं जाउछ जस्ट बिकॉज तुम गोटे स्पीच दे देछ कोटे कोटे तुम स्पीच दे देछ राइट टू बट जदि तुम कोटे स्पीच दे देछ कोन स्लोगन दे देछ को पॉलिटिकल लीडर सेही केस रे सुप्रीम कोर्ट that can take the case directly because सुप्रीम कोर्ट रो जो गोटे प्राइमरी फंक्शन सेटा हला फंडामेंटल राइट को एनश्योर करबा माने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करबा तो आर्टिकल 32 जोटा हम कहउछंती सेटा हम कहउछंती रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेमटी आर्टिकल सेमटी सेटा हला आर्टिकल 226 अछि आर्टिकल 226 टा कर रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रिमेंबर आर्टिकल 220 है रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 232 वाला रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपोर्टेंट सब एग्जाम रे बार ए जिनसटा आछि अच्छा सुप्रीम कोर्ट रो तो काम हला एटा आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिडिक्शन राइट व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोन बहुत जुरिडिक्शन अछि आज एक्चुअली क्वेश्चन 10 टा अछि तो तनो डिटेल के डिस्कशन कर दो जे एगुडा ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन जदी को स्टेट आउ स्टेट भीतर किसी कॉन्फ्लिक्ट हैला स्टेट कॉन्फ्लिक्ट तो सेटा ला ओरिजिनल जुरिडिक्शन राइट और सेंटर और स्टेट कॉन्फ्लिक्ट सेटा ला ओरिजिनल जुरिडिक्शन और ग्रुप ऑफ स्टेट एंड सेंटर तांको भीतर किसी कॉन्फ्लिक्ट हैला सेटा भी हैला ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैला तापरे आ गोटे अछि एडवाइजरी जुरिडिक्शन व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटा हला आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 व्हाट इज दिस आर्टिकल 143 ए सुप्रीम प्रेसिडेंट को भी गोटे मैटर रे सुप्रीम कोर्ट को मागी परिबे एडवाइस राइट एंड सुप्रीम कोर्ट रो इच्छा से एडवाइस देई पारे एडवाइस न दे पारे सो सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन whether to give advice
or not to advise. If Supreme Court give advices, then President may, I mean, implement those advices or may not implement those advices. It is advisory jurisdiction 143. तो सुप्रीम कोर्ट रो इच्छा से एडवाइस दे पारे, सुप्रीम कोर्ट रो इच्छा से एडवाइस न दे पारे, राइट. सेमती जदि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देला ता प्रेसिडेंट एडवाइस नहीं पारंती और से एडवाइस को रिजेक्ट करि पारंती. एटाला तमरो आर्टिकल 143 और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. आउट अछि आर्टिकल 1, आउट अछि आर्टिकल 136, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल. एटाला आर्टिकल 136. व्हाट यू नो आर्टिकल 136? एटा कहउछन स्पेशल लीव पिटिशन. स्पेशल लीव पिटिशन. व्हाट यू मीन स्पेशल लीव पिटिशन? सुप्रीम कोर्ट को भी मैटर रे इंटरफेयर करि परिबो. इट कैन इंटरफेयर इन एनी मैटर. जो 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 गोटे जेमती फॉर एग्जांपल कहउची, गोटे हम 1956 गोटे एक्ट थिला, एदर सुप्रीम कोर्ट को गोटे रिवर बोर्ड एक्ट गोटे आसिला, रिवर बोर्ड एक्ट. से मना कर कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन सॉल्विंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट. बट सही केस रे कोन से कोन हला, बट सुप्रीम कोर्ट रे इंटरफेयर कला. से कंपनी गोटे स्टेट कंप्लेन कर देथिला, तो सुप्रीम कोर्ट से क्रिटिसाइज करेगला. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आई हैव आर्टिकल 136, आई कैन इंटरफेयर इन एनी मैटर. तो सुप्रीम कोर्ट से भी इंटरफेयर करथिला. तो सुप्रीम कोर्ट जो मैटर चाहिए से मैटर इंटरफेयर करि पारिबो. All the authorities in the territory of India work under the jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court can summon anyone, right? कहा को भी Supreme Court डाकी दे परिबो निजर कोर्ट को, go come and answer, right? एटा हला Supreme Court रो पावर. अच्छा, आ गोटे कथा, जजेस मान केबे जजेस मान रहिबे? जजेस will retire at retirement judge is 65 years. Judges will work up to 65 years or they can resign by writing to the president, right? How can a judge be removed? Judge केमती remove हबो? जज को रिमूव करिया को हेले तमर सुप्रीम तमर पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजॉरिटी दरकार. स्पेशल मेजॉरिटी माने केते? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. जेतिकी लोक प्रेजेंट थिबे समस्त को वोटिंग, सब लोक जदि सेति वोटिंग करिवे ताले गोटे जज को हम बाहर कर दे परिबा. सुप्रीम कोर्ट रो जज कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, राइट. अच्छा, आउ कोन आ गोटे कथा मन रखो, से माने केमती अपॉइंटमेंट होती? दे आर अपॉइंटेड बाय कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम, ए कॉलेजियम सिस्टम ला बे न्यूज रे थिला. ए कॉलेजियम सिस्टम माने कोन? गोटे टोटल 5 मेंबर्स हला. ए 5 जन मेंबर्स माने 5 जन जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस. दे विल बी पार्ट ऑफ योर कॉलेजियम सिस्टम. ए जो कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम जहा को चाहिबो ताकू से माने जहा को कॉलेजियम जो जो रिकमेंडेशन दबो जे ये मन को जज करा हो, से माने सुप्रीम कोर्ट रो जज रे जानि था. सो कॉलेजियम सिस्टम रे माने जजेस अपॉइंट जजेस. एटा हला गोटे कथा, एटा गोटे क्रिटिसिज्म. आउ एबे टोटल नंबर ऑफ जज के जण अछंती 34 नंबर्स. टोटल नंबर ऑफ जज हेले 34 नंबर्स. गोटे सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल आसला 2009 रे. सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल सेतिरे तमरो टोटल नंबर हे गला 31 टू 34. एतिरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिसिकी भी अछंती हैला. कानी हला आउ सुप्रीम कोर्ट रे गोटे अछि अपीलेट जुडिक्शन. माने अपीलेट जुडिक्शन माने कोन? जे जदी कोनोसी गोटे कोर्ट को तमे जाउचो, हाई कोर्ट रे तमे डिससैटिस्फाइड हैला, यू कैन गो एंड अप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट बेनथा. आउ हमर गोटे नॉर्मल प्रोसीजर हैला इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस. सबू पनिशमेंट गुडा सुप्रीम कोर्ट पाकू ऑटोमेटिकली जीवो. फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट का डेथ सेंटेंस देला, सेटा को हाई कोर्ट वेरीफाई करिवो. हाई कोर्ट जदि ताको ट्रांसफर करिवो कोडे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को तो ट्रांसफर करिवो, और it will forward to the Supreme Court. Then Supreme Court will verify whether that person need to be given capital punishment or not. If Supreme Court finds that he should be given capital punishment, then he will send to president. Then president has pardoning power of president.
प्रेसिडेंट चाहिए ताको सबू तार जो अच्छी दोष अच्छी सब दोष क्षमा कर दे परिवे और कमे दे परिवे जेमती डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे परिवे किछि भी कर दे परिवे आउ प्रेसिडेंट से जो कामटा करिवे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने साधा भाषा रे कहया बोले गवर्नमेंट जहाँ चाहिए से से प्रेसिडेंट को एडवाइस देव आ प्रेसिडेंट जदि गोटे लोक मारिबार अछि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे सारला परे गवर्नमेंट राजी हैला परे देन वी कैन किल ए वन पर्टिकुलर पर्सन हैला यह सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जेतिकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थिला कहिदेली आज जेते सब क्वेश्चन गुडाक अछि को क्वेश्चन रे बेसी जीएस लिंक्ड क्वेश्चन नाही सेइतपय टिके बेसी एक्सप्लेन कर देली okay next who has been appointed as chairman on the board of directors of IndiGo by InterGlobe Aviation who has been appointed as the chairman of the board of directors one is Vinod Kannan Ajay Kumar Chaudhary Venkataramani Sumatran Rahul Bhatia Vikram Dev Dutt Venkataramani yes first you answered Pavitra answered first Amit C yes answer is C Venkataramani Sumatran this is board of directors of IndiGo by InterGlobe Aviation खाली आ गोटे क्वेश्चन यस अंतर्मयी अंतर्यामी yes C is the answer खाली आउट थिला ई रिलेटेड एविएशन रिगार्डिंग गगन गोटे थिला जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम जीपीएस एडेड जीए ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम राइट व्हाट इज दिस ये सिविल एविएशन क्षेत्र रे एतरे इंडिगो हला फास्ट राइट इंडिगो कंपनी सेटा फास्ट एक्सेप्ट करछि गगनटा हला इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम राइट इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम जो जी कौन करिवो जी डायरेक्शन दबो एई सब फ्लाइट मानकू जो डायरेक्शन टा दबो एटा हमर गगन हमर फास्ट इंडिया स्टार्ट करछि आउट स्टार्ट करछि आईआरएनएस ता रिगार्डिंग भी कहितली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हला गगन वाज स्टार्टेड बाय इंडिगो as well गगन टा हला नेविगेशन सैटेलाइट ओके नेक्स्ट देखियो Name the NASA climate research scientist who has won World Food Prize 2022 from the World Food Prize Foundation. Who has got it? One is Rizwana Hasan, then Cynthia Rosenwick, Francis Kerry, Carolina Biloska, Danis P. Sullivan. Pavitra option B. Yes, Gagarin. B on B. Yes, B is the answer. Cynthia Rosenwick. Cynthia Rosenwick has got World Food Prize from the World Food Prize Foundation. B. Cynthia Rosenwick has got World Food Prize 2022 from the World Food Prize Foundation. Yes, option B. Avinash right. Monica right.
Anupama right, Gagarin right. Okay. Then when NASA established? When NASA established? NASA established in 1958, right? Under NASA Act of USA, National Aeronautics and Space Act, right? Under NASA Act of USA, it was established in 1958. Headquarter koti? Headquarter is in Washington DC, USA. Washington DC, USA, right? And এই নাসা যেহেতু আসলে সেই রিগার্ডিং আমি ডিসকাশন করবো আইএসএস ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সিস্টেম इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एटा एबे न्यूज थिला कंपाइन न्यूज थिला कंपाइन रशिया इज गोइंग withdrawing from international space station international space station Russia is withdrawing from international space station अच्छा को कंट्री मिसी की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मन एटा बहुत बड़ सैटेलाइट कोठी अछि लो अर्थ ऑर्बिट रे अछि लो अर्थ ऑर्बिट रे केते रेंज 180 टू 2000 किलोमीटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केते अच्छी से 400 किलोमीटर रु 500 किलोमीटर भितर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एटा गोटे बहुत बड़ सैटेलाइट जोटा अच्छी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कौन कर रिसर्च करें को कंट्री इंपोर्टाट कथा है जे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे को कंट्री अच्छा है फास्ट है तुम नासा नासा ऑफ यूएसए है पांचटा मिसिक एटा करथिले गोटे हला नासा आ गोटे हला रॉसकॉस्मोस रॉसकॉस्मोस माने जानि था एटा रॉसकॉस्मोस ता हला एटा रशिया रो जो स्पेस एजेंसी सेटा हला रशिया हला रॉसकॉस्मोस ओके नेक्स्ट तापरे देयर इज जाक्सा जाक्सा कार एटा द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान जापान रो स्पेस एजेंसी टागु was JAXA and Canadian Space Agency. Canadian Space Agency, and European Space Agency. European Space Agency. Space Agency. तो कोको माने दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को करचंती सेटा हला नासा नासा हला यूएसए रो रॉसकॉस्मोस हला तो रशिया रो जाक्सा हला जापान रो कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ए पांच जण मिसी की करथिले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सो के फूड प्राइज पाइले सेले सिंथिया रोजनविक ही हैज गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज then World Athletics Day celebrated every year globally on which day to raise awareness about importance of fitness importance of fitness and encourage them to play sports especially athletics so that is 4th May 5th May 6th May 7th May 8th May World Athletic Day yes answer it when is World Athletic Day Yes, everybody 7th May. Yes, D is the answer. Amit, Manika, Pavitra, Avinas, and Avinas. Everybody is right. So the right. 7th May, D is the answer. 7th May, World Athletic Day to spread awareness about sports. India sports regarding course scheme अच्छी कही थी खेलो इंडिया स्कीम राइट खेलो इंडिया स्कीम रिसेंटली एटा न्यूज थिला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कोर्स ला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एटा ला कर्नाटक रे हितला
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूनि गेम्स कोठी हेतला एटा बैंगलोर कर्नाटक बैंगलोर कर्नाटक राइट एंड व्हाट इज दिस खेलो इंडिया स्कीम गोटे खेलो इंडिया स्कीम कोन यस खेलो इंडिया स्कीम रे मु कोन कहितली 8 लाख विल बी पेड फॉर 5 इयर्स 5 इयर्स केतटा स्पोर्ट्स अछि 17 टा स्पोर्ट्स रे 8 लाख टू बी पेड फॉर 5 इयर्स जो माने भलो परफॉर्मेंस करिवे सॉरी उल्टा कहली 5 लाख विल बी पेड फॉर 8 इयर्स right 5 lakh per annum will be paid for 8 years those who perform good in Khelo India games right Bengaluru re seta heitala Khelo India University games okay next देखियो Jain University it is in Jain University then India Fast Tribal Health Observatory Indian Fast Tribal Health Observatory will be set up in which state? Tribal Health Observatory will be set up in which state? Yes, answer is Odisha. Right? Odisha in Odisha, Anupama is right. Anupama, Venus, Monica, Pavitra, Amit, Shraddha, everybody is right. Odisha is the answer. Fast Tribal Health Observatory will be set up in Odisha state. Remember, Odisha is special because of highest number of tribal people, tribal types. Around 64 types of tribals are in there, and for example, there is also highest number of PBTG. Highest number of Odisha has highest number of particularly vulnerable tribal group. Particularly vulnerable tribal groups. Right? Odisha has highest number of PVTG group. PVTG means they are very those are tribal man जो माने बहुत underdeveloped. They are called as PVTG, particularly vulnerable. A total केते अछंती इंडिया total अछंती 70 types. In total 70 types in India. 70 types in India ଆଉ ओडिशा रे अछंती maximum tribal regarding जनता ହେଲା particularly vulnerable tribal groups अच्छा ओडिशा आउ को जो न्यूज थिला बे मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी बुक हु हैज रिटन मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी बुक चिलिका लेखटा हमर न्यूज रे थिला मंगल जोड़ी जिन चिलिका हु आंसर दियो हु हैज रिटन मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी रिसेंटली न्यूज रे थिला मु भी डिस्कशन करथिली के कोठी हु हैज रिटन दिस बुक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा तार ये करथिले Avinash Khemka, very good. So the right Avinash Khemka, right? He has written Magic of Mongol Jodi about Mongol Jodi, which is in Chilika. How come was Chilika at a brackish water lake?
largest lagoon of Asia, second largest of world, right? ଆଉ କଣ କହିଲି ଚିଲିକା ରିଗାଣି there are irradial dolphins, there is not a wildlife sanctuary जोटा 1987 ରେ भी डिक्लेयर ହେଇଥିଲା wildlife sanctuary, right? ସେଠି ଆମର କାଳିଜାଇ ଅଛି ଚିଲିକା। ओके एटा ब्राकिस वाटर लगोन ब्राकिस माने लुणी ह्रद सो आंसर हियर इज ई एटा भी न्यूज रे थिला तो डिस्कशन हे गेला। नेक्स्ट आमे देखिबा ओके हु टुक चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टर जनरल के नेशन इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी और एयर क्लास हे गेला। यस आई अविनाश खनका कौन yes answer is Sanjeev Kapoor no answer is Sanjeev Kapoor Sanjeev Kapoor option C yes Sanjeev Kapoor Amit right Avinash were right okay and आउ कौन न्यूज थिला हमरो आर्मी रो चीफ किए थिले मनोज पांडे बिकम आर्मी चीफ राइट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS is the Manoj Pandey eta भी न्यूज थिला so Sanjeev Kapoor is the it is right and right Sanjeev Kapoor took the charge as Director General of Inspection Safety of Indian Air Force मनोज पांडे भी न्यूज थिला राइट COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ okay which city hosted Indian National Coir Conclave कोठी हला not CDS Chief of Army Staff he is not Chief of Defence Staff okay okay right it which hosted Indian National Coir Conclave Madurai Alappuzha Coimbatore Kottayam Chennai yes Avinash right Coimbatore C is the answer Coimbatore is India's national coin conclave happened in yes option C
Avinash writes Shraddha Coimbatore. Avinash right. Ravitra C. Amit writes Coimbatore is the answer. See what is this coir industry? Coir industry. ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଟା ସବୁ ସୁତଲି ଦୌଡ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୂତା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କଏର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା World Red Cross Day. World Red Cross Day is observed globally on which day of every year? Red Cross Day. Yes, see next answer what World Red Cross Day. Yes, answer is 8 May. Right, 8 May. A is the answer. Right, 8 May. Why? Why it is celebrated on 8 May? Because that is birth anniversary of Henry Dunant. Henry Dunant. Right. Who is Henry Dunant? He is founder of Red Cross. Of Red Cross. Right. He has got first Nobel Prize. First Nobel Prize. Remember, founder of Red Cross. Right. And Indian Red Cross Society. Indian Red Cross Society. एटा एस्टाब्लिशमेंट होता 1920 रे रिमेंबर कौन पाई ह्यूमैनिटेरियन कौन से हेल्प पाई कि छोटे हेल्प पाई सोशल वर्क पाई ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देन इट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस दिस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टाब्लिश्ड राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सो 8 May इज द रेड क्रॉस डे every year during what United Nations marks the time of remembrance, reconciliation of those who lost their life during Second World War. May 5 to 6, May 6 to 7, May 8 to 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. Okay, এটা आंसर दिया जल्दी Yes, Amit, right. First answer, Amit. This is 8 to 9. No, so yes, so the right option D is answer. 8 to 9 is answer. That is remembrance or reconciliation for those who lost their life in Second World War. Okay, that is celebrated by the United Nations. Acha. When United Nations established? United Nations established in 1945. Right? It was founded right in 1945 after Second World War. ता पूर्व कौन थिला? ता पूर्व गोटे थिला लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशंस. सो लीग ऑफ नेशन टा कन्वर्टेड हो गला
यूनाइटेड नेशन को बिकॉज देयर इज फेल्योर ऑफ यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन हला ओके देखो आउट कथा हला यूनाइटेड नेशन रो केता इंपोर्टेंट कंपोनेंट हल 6 इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स राइट 6 इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन 6 इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स गोटे हला जनरल असेंबली जोटा हमें कहउछन यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए आ गोटे हला यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल जोटा सबुठ पावरफुल जोटे पांचटा मेंबर अछंती राइट रशिया यूएसए यूके एंड योर चाइना एंड योर फ्रांस ये P5 कंट्री जो मानकर परमानेंट मेंबरशिप जो मानकर वीटो पावर अछि सेटा हला यूएनएससी राइट तापरे यूएनएससी परे आउट अछि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक ECOSOC इकोनॉमिक SOC and social council right after that there is trusteeship council remember trusteeship council UN trusteeship council आ गोटे हला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देन योर UN सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट रे कोन हुए सेक्रेटेरिएट सब यूरो प्लान गुडा इंप्लीमेंटेशन हुए UN सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे तोर इंटरनेशनल किछ डिस्प्यूट हैला सेठी सेटा ट्रस्टीशिप काउंसिल कोन दे विल प्रमोट वॉलंटरी वर्क्स ट्रस्ट माने मिसी के काम करियो ट्रस्टीशिप काउंसिल ECOSOC मींस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे से किछ काम करियो सेटा हला समर एटा हला 6टा इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन मन रखो एबे 130 and 193 मेंबर कंट्रीज अछंती 193 member countries at present they are in United Nations 193 सब जिनस लेखि नथो बार लिखिले डेली याडू सेडू 50 टा जिनस रिवाइज करले तमर मन रहइबो त बार भूलिबा बार मन रखियो देन ओनली यू कैन रिमेंबर नले करंट अफेयर्स सब जिनस त मन रखि परिबनी जीएस हला बहुत बड़ सो रेगुलरली ताको प्रैक्टिस करिया दरकार जहाँ भी लिखा होची ताको सब निज खाता लिखि दबो कमेना गोटे थर पढ़ी कि तमे कोनोसी जिनस मन रखि परिबनी एटलीस्ट यू नीड टू रीड इट 3 to 5 टाइम्स नले किसी जिनस मन रहबनी आ परे सेटा करिया पड़िबो हैला तो यार बहुत आउ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड और यूनाइटेड नेशन रो स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी अछि स्पेशलाइज्ड एजेंसी अछि यूनाइटेड नेशन सब गुडा हला इंपोर्टेंट जेमति तमर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से कोर्ट में काम करछि लेबर मान को राइट्स पे से काम करछि राइट तमर पुणे और कोन अछि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेला स्पेशलाइज्ड एजेंसी आउट हमर हला यूनेस्को अछि यूनेस्को को में काम करछि ये वर्ल्ड हेरिटेज रखिया पई हमर कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करिया पई देयर इज यूनेस्को राइट देयर इज आल्सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोन ये इंटरनेशनली सबु कंट्री मानकू किछ गोटे बड़ जो पैंडेमिक पळे आसला इट विल एडवाइस वेरियस कंट्रीज इट विल हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग राइट एंड इट विल आ कोन WHO आ कोन करछि जंती कोन से गोटे इमरजेंसी सिचुएशन पळे आसला WHO will give advice regarding health it will monitor the activities of various countries regarding their development of health right और तमरा आसी वाला वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो पांचटा बैंक अछि 5 बैंक्स राइट इंडिया लास्ट बैंक जोड़ा ICSID तार मेंबर नाही पांचटा बैंक अछि तो वर्ल्ड बैंक ताको मु कहितली राइट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एटा गुड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये कोन करे के कार बैलेंस पेमेंट क्राइसिस हे गला कार डॉलर क्राइसिस हे गला IMF ताको लोन दबो किछि गोटे इकोनॉमिक सब इकोनॉमी को एडवाइस दबो IMF सो ये टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पन बाहर करे कि सब जिंस स्टडी करूछि आउट अछि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन माने किछि सब जो फ्लाइट करिवे सपोज इंडिया रो फ्लाइट जाउछि रशिया को इन सब फ्लाइट कोसंती से सब जिंस मैनेज करिवो आउट अछि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO राइट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मींस तमरो मैरीटाइम रीजन जो सी सरफेस रे सब जो ट्रेड होउछि बहुत गुडे नेचुरल रिसोर्स अछि सी भितरे ओशन भितरे सेही सब जिंस रिगार्डिंग ये काम करछि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हला आउट अछि इंपोर्टेंट हला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट WIPO से सब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को स्ट्रांग करियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने
तुम सपोज गोटे म्यूजिक क्रिएट कर यू नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर दैट मकर रहमान कौन सब जी म्यूजिक वाला गोटे म्यूजिक क्रिएट कले तो सही जिनसा केवल से ही सेल करें जी भी यूट्यूब अपलोड कर विदाउट दैम परमिशन दे कैन नॉट यूज इट और तुम गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे तुम गोटे सेल गोटे गीत सपोज तुम गाना गाना वाला गोटे जी म्यूजिक गोटे सॉन्ग से बजेबे दे विल टेक द परमिशन फ्रॉम जी म्यूजिक तामान तुम जदि गोटे जिनस बही लिखुछ क्यूट लिखुछ तापर केवल तमर राइट अछि एवडा हला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हला कि तुम मेडिसिन बाहर कर जो कंपनी बाहर कला तापर तार गोटे राइट अछि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम तो कॉपी कर नै बिक्री कर परिबो गोटे बुक तुम नै कि कॉपी कर निज नाम तुम सेल कर परिबो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहितले से विषय रिगार्डिंग हला गोटे ट्रेडमार्क अछि गोटे कॉपीराइट अछि आ गोटे अछि तुमर ट्रेड सीक्रेट्स अछि आ तुमर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जेमति कंदमाल हळदी गोटे पर्टिकुलर एरिया रो से खाली हळदीटा हला बेस्ट क्वालिटी से तय कंदमाल हळदी हला ओडिसा रसगोल्ला सब ओडिसा हला स्पेशल हला हां यूएनसीटीडी से भी ट्रेड रिलेटेड बहुत एडवाइसेस दिए को कंट्री रे बेसी माने केमती हेल्प माने एफडीआई केमती हेल्प होची का तार डिफिकल्ट होची ट्रेड रिगार्डिंग से एडवाइसेस सब दिए सो ये गला दिस आर ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन आज एति क्वेश्चन डिस्कशन करिवा रेस्ट टुमारो ओके थैंक यू ऑल नमस्कार थैंक यू टू एवरीबॉडी